The topic of today's discussion is government flexibility with architecture in terms of past, present and future architecture creation. I was being, dictated by the topic which was given to me by the organizer, and actually it was not my cup of tea. I really like to put on all the points of discussion here and try that we all should go home and we all should take away certain good conclusions with us. Before we actually, deliberate on this topic, we should just understand, the history of India. The then princely state, sir. All the princely state in India, actually has given a strong architectural legacy. I think Jaipur, for that matter, Mewar, for that matter, Haradoti, Marwar, we have witnessed. And I think people from across the globe come to these places, set it as an example. That time, princely state were actually being governed by the so-called kings, the Rajas. So they were the government of that time. And the kind of architecture which they created and which is lasting till date today is what we all are admiring. What is lacking is what today we are going to discuss on this forum with the eminent panelist. Mr. Chaturvedi, I think first question goes to you. Being a chairman of Indian Institute of Architects Rajasthan chapter, I am also part of the expert committee in UDH, Whenever, sir, you being a town planner, government changes, ideology changes, how painful, how challenging it is for you to, overall work for the growth of a city, for the growth of the building parameters. How challenging it is when the government changes, And this changes this scenario since 2000, from the start of 2000, because as per my knowledge, the first bylaws which I saw was the bylaws 2000, which was for the state. Then it got changed in 2012. Correct me if I'm wrong. Then there were the next bylaws came in, say, 2017. Now there is a new bylaws in 2020, the last bylaws. They have a radical change coming in step-by-step directions. Today the bylaws are much more, I think, architecture friendly than they were in 2000. Yes, the changes are there. They would be, because it's a matter of change and adaptation that's going to help and will help us in the period of time. But I would not say, sir, it is politically. Now it is what you say, the stakeholders are taking very much interest, and the majority of architects and planners are also coming into the picture. First, there were only, say, about 3 colleges of architecture. Now there are around 16. Correct. In Rajasthan only. Correct. So yes, the things are changing, the numbers is changing, and due to the numbers, we, as a part of the system also, we are also having that open thought process. Let's think out of the box. Let's not be in the frame of वो 4 दीवारों के फ्रेम से हटके थोड़ा बाहर निकलो. वो वाला सिनेरियो बहुत अच्छा हो गया. तो मतलब आपके हिसाब से scene has really changed, the stakeholders have transformed themselves, and finally I think when stakeholders actually play a very pivotal role in building out any architecture, the things automatically take shapes and the built form comes out. Okay, sir, thank you for that insight. Sir, it has been seen, in a country like India, stature of an architect, is not that recognized in terms of when they create a landmark build form. For that matter, when Charles Correa was there were few figures, legendary figures, who was being respected by the government, because they were legends. But why not it can happen in a country like India, that whenever I create any build form, it's up to the wisdom of the experts that they give this particular build form designation of we can have that after erection of any architecture, any build form, the name of that architect, like what is happening in the European countries, long last there. Instead of इस भवन का शिलान्यास माननीय मंत्री श्री डैश 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 के द्वारा किया गया है. I think we at an association level,
we at a state level, we should put this thing forward, and I think charity begins at home. We should start this from Rajasthan, and I'm going to put a letter to the government of Rajasthan कि आप सरकारी प्राइवेट में तो मेरा कंट्रोल नहीं है, वो डेवलपर्स को, I have to talk to them, बट सरकारी भवन जो भी जिनका भी एक सृजन होगा उस पे आर्किटेक्ट का नाम जरूर लिखा जाए. Question to you, Mukul ji. We have actually seen how, Rajasthan chapter, our association has grown up, last 2 decades, and we have our say in the government. Moment government changes, our line of action also changes. We have to get in tune with them. Why? Now, there are 2 things which you mentioned. One is about the recognition that an architect should get the recognition that he deserves, number 1. Number 2, you mentioned that whenever a government changes, all of a sudden everything falls back to square one. वो snakes and ladders का गेम नहीं खेलते थे हम, तो एक लेवल पे हम पहुंचते हैं गवर्नमेंट में, एक सिंक्रोनाइजेशन बैठता है कि भाई ये ऑफिसर्स हमें इज्जत देने लगते हैं, और पता चलता है जो वो ऑफिसर है वो चेंज हो जाता है और दूसरा एक ऑफिसर आ जाता है. एंड नाउ अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्वायर वन. We start telling the officer कि this is IAA, this is the importance of IAA, this is what IAA can do for the city, right? हम हमेशा ऐसे करते हैं, मतलब हम लोग भागते हैं हर बार जब भी ऑफिसर बदलता है, JDC बदल गए, UDH के वो बदल गए, तो हमेशा हम जाके मिलते हैं. बट इट्स अ प्रोसेस लाइक द शेयर मार्केट. जैसे किसी शेयर का वैल्यू ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है हल्का सा, फिर वापस ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, बट एट द सेम टाइम इट कीप्स ऑन. अगर हम 20 साल का जर्नी देखें तो हमारा जो आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन की जर्नी रही है पिछले 20 साल में, इट इज़ अमेजिंग बिकॉज टुडे नाउ ईच एंड एवरी गवर्नमेंट मिनिस्टर, ईच एंड एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर नोज व्हाट IIA इज. मतलब मीटिंग में बैठते ही वो कहते हैं यार ये कुछ बिल्डिंग से संबंधित है, एक काम करो यार, वो आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन के 2 रिप्रेजेंटेटिव बुला लो. Now this has started coming automatically, and now it did not happen on day one. It happened because our pursuant nature with the government again and again. तो जो junior level officers थे वो आज senior level post पे बैठे हैं. एंड क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं तो जो आज जूनियर हैं ऑफिसर्स वो देख रहे हैं समडे दे विल बिकम सीनियर ऑफिसर्स. सो आवर पोजीशन इन द गवर्नमेंट, तुषार, इफ यू विल अग्री विद मी, हैज बिकम बेटर एंड बेटर विद एवरी ईयर. दैट इज पॉइंट नंबर 1. आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी पॉजिटिव एज फार एज आवर पावर इज कंसर्न. जितने दिन, बल्कि मैं उदयपुर का कई बार मिसाल देता हूँ कि कैसे यहाँ पे IAA ने मिल के जो गवर्नमेंट के साथ पहल चालू की है वो 10 साल आगे जाके उनको बहुत बड़ा वापस देगा. आज हमें मालूम नहीं क्या देगा, बट यू विल गेट अ बिग रिवॉर्ड 10 years hence, बिकॉज आज आप वो मेहनत कर रहे हो. आज जो जूनियर ऑफिसर्स उदयपुर में हैं वो देख रहे हैं आप लोगों को और बड़े अच्छे नजरों से देख रहे हैं. एंड 10 साल बाद वही जब जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर में कन्वर्ट होंगे, वो पहले कहेंगे भैया IAA को बुलाओ, फिर आगे बात करेंगे. एंड दैट इज योर अचीवमेंट. सो आई हैव टेकन वन पॉइंट ऑफ योर्स. आई वांट टू टेक अ स्मॉल पॉइंट ऑफ योर्स. मैं ऑस्ट्रेलिया में एडलेड में गया था, तो बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट आई डू अ लॉट ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर. तो वहाँ पे मैं स्ट्रीट्स को स्टडी कर रहा था. ऐसे ही सुबह सुबह निकल गया 7 बजे और वहाँ के सड़कों को नाप रहा था. जस्ट वॉकिंग 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो गए थे, मैं चल ही रहा था. अचानक एक सड़क पे देखा मैंने, पेवमेंट पे गोल गोल से गोल्डन कलर के प्लाक्स लगे हुए थे, जस्ट मेटल प्लाक्स विद नेम्स एंड देयर प्रोफेशन अंडरनीथ. सो सम पर्सन's नेम एंड इट वाज रिटन इंडस्ट्रियलिस्ट. फिर एक आगे चला थोड़ी देर, नेम उसमें लिखा था मेयर. फिर आगे चला somebody, then somebody, मतलब वो इंडस्ट्रियलिस्ट. तो मुझे समझ में आ गया कि जितना ये ब्यूटिफिकेशन हुआ है ये डोनर्स हैं जिन्होंने किया है. एंड आई वेंट टू द लास्ट ब्लॉक, उसमें लिखा था आर्किटेक्ट. इतनी खुशी हुई अंदर से कि देखो इन लोगों ने भी कितना इंपॉर्टेंस दिया है एक आर्किटेक्ट को, कि एक प्लाक उन्होंने आर्किटेक्ट के नाम रखा हुआ है. So if a small city like Adelaide in Australia can do this, why can't we do it in our place? Why can't Udaipur do it? आज उदयपुर के architects are
डेवलपिंग सर्टन एरियाज ऑफ उदयपुर, तो उसमें आप साथ में जो बीओक्यू बनाओ ना, तो उस बीओक्यू में एक प्लाक का भी वैल्यू डाल दो। क्यों नहीं होगा? आपने बीओक्यू में डाल दिया, आप ही को तो डालना है, किसी दूसरे को तो आके बताना नहीं कि साहब ये इनके लिए कि आप खुद ही डाल दो। So I think that can happen, and in fact, as Tushar has mentioned, that if IE Rajasthan writes a letter to the government that please let us give some kind of responsibility to the architects कि हाँ हर बिल्डिंग पे आर्किटेक्ट का नाम होना चाहिए, ताकि कल को कोई भी चीज पूछनी करनी है 10 साल बाद तो आपको मालूम तो है कि इस आर्किटेक्ट ने बनाया था। There should be some kind of image and association left with the building with the architect. So I totally agree with you. Absolutely, sir. Absolutely. Just in continuation with what Mukulji is telling, in 2017, sir, when we were approached for the formulation of building bylaws, I, being a representative that time from IIA, was very firm in telling the government. I remember your present UIT Secretary Asija ji was OSD to Minister, UDH Minister, Sri Chandra Kriplani ji. We clearly, straightforward told him that if you are going to involve the developers community, the builders community in the formulation of building bylaws, please, we want to get away from it. The then Secretary, Mr. Mukesh Sharma, said, well taken. Builders are the beneficiaries, will keep them away. And this is how 2017 bylaws came into force. We talked about the unified BRs, the unified bylaws. So this is what the power of architects is. When you are being, involved, you are being, and I tell you, the powers lie within us. It's up to us how we utilize it. हमें हनुमान है हम सब, हमें जामवन चाहिए. All of you become Jamvans of yourself, and we are going to create milestones. And sir, for that matters, I would really like to cite one case of recent case. I heard about that IPD building which is going to construct in Jaipur, SMS Hospital. That is going to be one of the tallest building, 127 meter, and unfortunately it is being designed by a non-architect, the designer is a non-architect. So I was the part of expert committee. I was, brought into that expert committee, and then I was asked, say, how can we give permission to a hospital building of 127 meter without doing a geotechnical survey, without getting a fire NOC? At that time, we were striving with the height NOC for 32 meters. One gentleman comes and say, I want to make a building of 127 meters. I say, have you ever seen a hospital in India which has got this height? Because there are certain things, it can be height phobia, it can be a government building, cannot be a air conditioned, box type building, where if masses come, because that building was going to cater masses. So I was the only man, since I was the only outsider, but my resentment, I am not with it. He said, what is geotechnical survey? Which he has not done. He is erecting a structure of 127 meter. So he must be needing, geotechnical studies for that. So that day it was resolved, no, we'll keep this meeting on. So we'll continue it till tomorrow. We'll call that architect. Next day I received a call from someone that it is an ambitious project of this government. So please, I say, what? So please, I say, I am off. I'm down with fever. I'll not go to that meeting. It came in the newspaper that is building ki height pe sehmati nahi bani. And after that, within 2 days, all these compliance were done. If you have got a political will to make a iconic structure, सलाम है आपको, लेकिन उसकी contextuality, उसकी relevance देखना बहुत जरूरी है. अच्छा होता सरकार अगर बनाने से पहले हम वास्तुविदों से कुछ सजेशन लेती, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट लेती कि भाई ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाने की मंशा है, उद्देश्य है. Assume, benefit of doubt. Every government when they spend money, it comes up with a good intention. पब्लिक का पैसा है, मानते हैं सरकार अच्छे इंटेंशन के साथ आती है, लेकिन क्या एक बार कोई भी स्ट्रक्चर जैसे सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट पे it was a window dressing, I was in one of the, by default I entered in one of the group of क्लब हाउस. नया जोश चला था सोशल मीडिया का, तो मैं भी क्लब हाउस में घुस गया तो पता लगा सेंट्रल विस्ता के ऊपर डिबेट हो रहा है. मैंने कहा इट्स रिलेवेंट. मेरे को लगा खाली यहाँ पता नहीं कुछ पेज 3 बातें चलती होगी, बट इट वाज द सेंट्रल विस्ता टॉपिक. सो आई एंटर्ड इन दैट, एंड सेंट्रल विस्ता पे
ल्यूटेंस दिल्ली के साथ जो एक छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, हम बहुत आर्किटेक्टों ने, बहुत एसोसिएशंस ने, सीओए ने, आईआई ने रिप्रेजेंटेशन दिए, बट जब किसी पॉलिटिकल कद किसी का इतना बड़ा हो जाता है कि सारे लोग गौन हो जाते हैं, बहुत बुने हो जाते हैं, तो हो सकता है हमारी भी क्षमताओं पे कुछ एक जंग सी लग जाती है, तो कंस्ट्रेंट्स होते हैं. Anyways, not getting too much political into it, otherwise ना I will also face the music. तुषार जी, I want to just सर ने अभी उदयपुर चैप्टर के बारे में थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे. How this उदयपुर chapter came into picture? अच्छा. You know that? Sir, There was a very historical event what happened here. हाँ. अच्छा, you are aware of that? Yeah, I was a part of that. अच्छा sir. Basically, I was posted in Nagar Nigam. Okay. So, as an architect also, I felt that architect should be the drawings, the municipal drawings which are coming into the picture to get approved should be categorized as per the bylaws. What is been given, the hierarchy has been given. They were not happening like that. I started this phase of say giving the security to architects that you have this power. Start it like that. You work on it, or you approve the drawings as per the bylaws has given you the facility out here. There was a clear cut oppose by many peoples, and due to that oppose there were newses, there were paper cuttings going around, everything is was happening. But the fraternity here, which is sitting right now, has supported me at the end of the day. These people got hand by hand, supported me till the end of the day, and they said, okay, we as architects come into in a sound manner, and we will sit around and how we could represent ourselves to the government. Sub Udaipur chapter came into picture. That's And great, thanks sir. to all the guys, from the bottom of my heart, you stand till the day, and the venue and the gesture will go way beyond. We will see it. तो कपिल, ओवर टू यू. आप सरकारी प्रोजेक्ट्स भी करते हो, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, यू नो. Yes, sir. सो डू यू थिंक दैट सरकार के इंटरफेरेंस से आर्किटेक्चर सबड्यूड हो जाता है? Yes, sir. Definitely, I agree with you. एक्चुअली क्या होता है सर कि 3 पॉइंट्स से आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इफेक्ट करती है गवर्नमेंट बिल्डिंग बाईलॉज और उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट पॉइंट आता है BAR, बिल्ट अप एरिया रेशियो. सेकंड पॉइंट इज सेटबैक्स एंड थर्ड पॉइंट इज बिल्डिंग हाइट, परमिसिबल बिल्डिंग हाइट. उसमें क्या होता है, मैं इस पूरे बिल्डिंग्स के पार्ट को 2 पार्ट में देखता हूँ. एक पार्ट आ जाता है रिजॉर्ट्स, फार्म हाउसेज, बंगलोज. उसमें क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं, आर्किटेक्ट्स कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं उसमें, क्योंकि काफ़ी छूट दी हुई है. लेकिन जहाँ जो आर्किटेक्चर से बिल्डिंग डिज़ाइनिंग जो इफेक्ट करती है, वो मुझे लगता है, मैंने ये 15 ईयर्स के मेरी नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है. जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं या फिर मल्टी स्टोरी होटल भी अगर आ रही है, तो उसमें डेफिनेटली बिल्डिंग बाईलॉज के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना पड़ता है. काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देती है. जैसे एग्जाम्पल मेरे को सेटबैक दिया है, एग्जाम्पल सेटबैक के पॉइंट पर आ जाता हूँ. तो एक गवर्नमेंट की तरफ से हर प्लॉट के लिए सेटबैक्स डिसाइडेड है कि कितने हाइट के ऊपर कितने सेटबैक लेने हैं, उसके बाहर आप निकल नहीं सकते. और बिल्डिंग के अगर हमने सेटबैक अगर ज़्यादा छोड़ दिया तो बिल्डर को BR में लॉस होता है. बिल्टअप एरिया जो होता है, सेलेबल एरिया होता है, उसमें काफ़ी लॉसेज हो जाता है. तो बिल्डर उधर से बोलता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप निकाल के दो, और इधर गवर्नमेंट बोलती है कि आप इससे बाहर नहीं आ सकते. तो एक तरह से आर्किटेक्ट के लिए बिल्डिंग डिजाइनिंग में 2 हंटर्स हो गए. सेटबैक के बाहर गए तो गवर्नमेंट हंटर लेके बैठी हुई है, और अगर बिल्डिंग के सेटबैक लाइन के अंदर गए तो बिल्डर आपके लिए हंटर लेके बैठा हुआ है. ऐसा तो उस वे में हमको जो सेटबैक्स के अंदर कुछ भी आप प्ले कर सकते हैं, अंदर काफ़ी कुछ अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं. लेकिन एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंडिया में पूरे में, मुंबई भी प्रैक्टिस किया, गुजरात में भी बिल्डिंग बनाया, लेकिन बिल्डिंग बाईलॉज के अकॉर्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को स्ट्रेट फॉर्म में डिज़ाइन करना पड़ता है. उसमें प्रोजेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए आपको सेटबैक के बाहर आप आ नहीं सकते. अगर वॉइड ही दे दिया तो आपको एरिया का लॉस हो जाता है. डबल हाइट, जैसे कल सर आपका प्रेजेंटेशन देखा था मैंने, जो आपने डबल हाइट टेरेस दिया था, तो आपने बोला था कि BAR का लॉस हुआ था, तो बिल्डर ने आपको सपोर्ट किया, इसलिए आप कर सकते हैं. तो सब लोग उतने लक्की नहीं होते हैं कि बिल्डर आप पावर दे कि ठीक है आप इतना एरिया का लॉस कर दीजिए, हम लोग सफ़र करेंगे. क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, फ्लैट्स के लिए भी, फ्लैट्स बेचने के लिए भी. लैंड इतनी महंगी हुई है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी हो गई है, इतना प्रॉफिट मिलता नहीं है. तो बिल्डर का हमेशा प्रेशर ये रहता है आर्किटेक्ट्स के ऊपर कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया निकाल के दीजिए. फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि हाइट के ऊपर. हाइट में क्या होता है, हर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है कि जैसे पर्टिकुलर प्लॉट होता है, या उदयपुर लेवल की
अगर अपना लोकल अथॉरिटी के पावर है तो 30 मीटर के ऊपर जा नहीं सकते हैं। अब हमको सेटबैक के अंदर और 30 मीटर के अंदर अंदर उनको बिल्ट एरिया निकाल के देना है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हाइट में रिस्ट्रिक्शन ईजीनेस मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ठीक है आपको इतना BR यूज़ करना है, लेकिन इतना आपको 15 फ्लोर्स का, आपको 45 मीटर का या 60 मीटर का आपको पावर दिया जाता है, आप इतना परमिशन ले सकते हैं या प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इसमें हमारे लिए इजी हो जाता है कि कहीं पे हम प्रोजेक्शन दे सकते हैं, कहीं पे वॉइड छोड़ दिया, डबल हाइट, ट्रिपल हाइट बालकनीज, टेरेसेस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है BR का, हाइट का, और इसकी वजह सेकंड पार्ट आई मिस्ड एक्चुअली। और जो सेकंड पार्ट में बोला था कि रिसोर्ट्स में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे बाइलॉज बनाए हुए हैं, क्योंकि रिसोर्ट में काफ़ी लैंड काफ़ी बड़ी होती है, 80,000 स्क्वायर फीट मिनिमम लैंड एरिया चाहिए होता है, और उस पर गवर्नमेंट BR बाइलॉज के अकॉर्डिंग 20% कंस्ट्रक्शन का ही अलाउड करती है। तो 20% में आर्किटेक्ट्स के पास पूरा पावर है कि जैसा चाहिए, जिस शेप में चाहिए, कर्व में चाहिए, शेप में चाहिए, वो डिज़ाइन कर सकता है। ऐसे ही बंगलोज में पहले रिस्ट्रिक्शन काफ़ी थे, 2020 जो नए नॉर्म्स आए हैं उसमें भी हमने भी काफ़ी लिखा, सर का भी काफ़ी सहयोग रहा कि जो अच्छे बाइलॉज अभी बन के आए हैं, तो इसमें छोटे फ्लोर्स पर भी गवर्नमेंट अभी 6-6 फ्लोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो आर्किटेक्ट्स के पास अभी इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि नीचे पार्किंग दे सकते हैं, नीचे गार्डन दे सकते हैं, स्टिल्ट एरिया भी हाइट में काउंट नहीं होता है। अभी छोटे छोटे फ्लोर्स पर आप 5 फ्लोर 6 फ्लोर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी जो नए नॉर्म्स आए हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है बंगलोज के लिए, रिसोर्ट्स के लिए, फार्म हाउस के लिए। So my question to you is, why not it is happening in the present era that I am moving, in the fringe areas where the new architecture has been created, and I say, look, wow, good, अच्छा. Why doesn't it happen? So इससे क्या आर्किटेक्चर की जो क्वालिटी थी वो पिछले वर्षों में डिग्रेड हुई है? जो बिल्डिंग्स नई डिज़ाइंस हो रही है उसमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रख रहे हैं, जैसे जिस हिसाब से डिटेलिंग हो रही है और प्रॉपरली। वैसे सर जो बिल्डिंग डिज़ाइन का लुक आता है कि प्रॉपर सेटबैक्स का रखें उसके अंदर। अभी जो भी बिल्डिंग्स बन रही हैं सर जैसे बाइलॉज में भी ग्रीनरी का बढ़ाया, पहले 1000 फीट के प्लॉट पे 1 पेड़ का प्रावधान था, अब उसी जगह 4 पेड़ कर दिया। लेकिन अभी बहुत सी बिल्डिंग्स में अपन देख रहे हैं कि ग्रीनरी को प्रॉपर यूज़ नहीं किया जा रहा है उसके अंदर। और अभी अपन को सर बिल्डिंग क्वालिटीज़ में नई टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे आदमी जब उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहे तो उसके मुंह से आहार निकले। I think that's a valid point. I think this question goes to Gagan. What is your take on that? That government की policies में कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई फ्लॉ है, कोई इंटेंशंस क्लियर नहीं है, या वी आर एट अ वेरी प्रीमेच्योर स्टेज? I am Gagan Garg and I practice out of New Delhi. I am a qualified architect and a town planner. I am an urban planner. I passed out in 96 from SPA Delhi. Today I am fortunate to be sitting among eminent architects and young budding architects of the state of Rajasthan, which I think is the most beautiful place on earth. My concern, before I come to the relevant question which has been asked, there are a couple of things I want to say at this platform because I don't know when I'll be at this platform again. The interest, the push, the IIA sub-chapter of Rajasthan and Jaipur and Udaipur, this is tremendous. This is tremendous effort, and my request to all the eminent architects and everybody here is, first of all, what the government policies are ignoring is the future of all our cities. If you need to have before we come to a building, we need to protect our city. New Delhi was fortunate enough, in the 60s we had the best of planners. Government intervention was at its least. The town planner made the planning of New Delhi what it is today. There was a master plan created. There was a ridge which was protected. There was a master plan which was imposed on the residents. It is not happening across India in any city. Why? Before we raise the voice, it is in your hands to protect the cities, the beautiful cities of Rajasthan. Our town planner from Rajasthan government is sitting with me. My request to you and my request to all of you, raise the social voice, protect your cities. Where are the green belts? Today Delhi has become a monster. You have to save your cities from becoming a Delhi-like monster. Why? Because it's a continuous mass. When
England, when London was planned, when Greater London Master Plan was made, after a radius of 25 kilometers, there was a 20-kilometer green belt all around. We have, as town planners, as my government, and due to government intervention, due to the political interventions, my town planner friends in the government are unable to make the green belts because everybody wants continuous growth. Nobody wants to give up the plot for green belt to the government. And government and the political intervention, we have to protect, you have to protect your cities. First of all, start from the master plan, push the town planners, push the, your CTP, enable him through social media, through press, through all the channels available, like the Kisan Andolan, protect your cities with green belts, demand green belts. Once you demand, nobody talks of green lungs, there are no green lungs. एक छोटा सा पार्क हम बना देते हैं यार बहुत हो गया, नहीं है. You need to raise your voice. This is required all over India. Sorry, I am taking a little longer, but this is heartfelt. That is very relevant. This is heartfelt. Save your city. Demand green belts. Demand clean air. The town planners, you will enable them. They are also hand-bound. The chief town planner, the political people sit and say, यहाँ पे industrial बनाओ, यहाँ पे housing लाओ, यहाँ पे उसे पता है किस political mafia, pardon me for saying all this, he knows the political mafia who sits in front of the town planner and tells him ये color yellow करो, इसको red करो, इसे blue करो, green भूल चुके हैं. Enable, as architect fraternity, enable the town planners sitting in the government offices to make the best master plan for you which has green belts, so that the monster which Delhi, Gurgaon, Noida has become, it's a continuous 200 kilometer by 200 kilometer of continuous mass. How do you think you want Jaipur and Udaipur, the most beautiful places on earth, to become like that tomorrow? Save them today. Otherwise, don't repent 20 years later. That was point number one. Second thing, coming to the contextual, the most beautiful buildings are coming up. My young architect fraternity, all the architects today, there is no doubt people are making the most beautiful buildings. The most beautiful buildings which are relevant, contextual. And I think the freedom of creating a building should be given. And context, every architect should have the freedom to design and decide his context. And this freedom which is coming in Rajasthan, where 60 architects have been empowered to approve the plans, is a wonderful initiative. I'm thankful to the government officials for let's take it forward. Eminent buildings are coming up. Every time I visit Jaipur, every time I come to, everywhere I travel, architects are making beautiful buildings. No doubt about that. So contextuality is there. One more request is we should also request the government authorities to make a single point approval process. Put the fire expert in that office. Put the environment expert in that office. Put the civil aviation guy in that, one man from all offices in one building. That table should approve. Why should we all suffer? I suffer for 2 years in Delhi. Delhi is the biggest, most difficult place to get approvals. I go to NDMC, I go to MCD, I go to DDA. 3 different bodies. I've spent 30 years getting plans approved from all these 3 bodies. There are 8 departments in each. These 8 departments, I mean, only due to my grit, only any architect. So only by perseverance we can get our plans approved. Please, humble request, make single building. Put all the experts in that building. But architect should not go out of that building to 8 buildings to get the plans approved. सर देखिए, आर्किटेक्ट की तरफ से और पॉलिसी मेकर्स की तरफ से एक शेर के साथ में डिस्कशन को एंड करना चाहूँगा. सिर्फ हंगामा खड़ा करना, इस डिस्कशन के माध्यम से सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है. मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए आपके मन में, पॉलिसी में. तेरे सीने में सही या मेरे सीने में कहीं आग, कहीं भी हो आग लगनी चाहिए. I think we should take this thing forward. Thanks a lot.